Namaskar all of you. Before starting the class, this is a short presentation of the Odisha Civil Service Prelims test series. So, a particular test series re apanଙ୍କର 55 टा live test रोची plus 45 टा self assessment test रोची plus previous year जो test series अछि तारो भी access रोची through the app. एटा online और classroom दीटा जाको मोड रे रोची आउ सबु गुडा टेस्ट गुडा full length test. Okay, means GS paper पे अपन 100 questions रोची और CSET में 80 questions रोची. Full explanation PDF अपन को app रे मिल जिवो आउ classroom रे जो माने join करचंती अपन को आंसर कीज आउ क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी रे मिल जिवो आउ एक्सप्लेनेशन पीडीएफ थ्रू द ऐप आपण कटक रे दे परिबे भुवनेश्वर रे दे परिबे ऑनलाइन डेटा दे परिबे फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सएप 7684054656 और यू कैन कॉल तो एटा तरह शेड्यूल रोची ए पीडीएफ टा आपण यू कैन गेट इट इन आवर टेलीग्राम चैनल नाले व्हाट्सएप कॉल भी आपण को ए पीडीएफ टा मिल जिवो सो 55 टा लाइव टेस्ट आपण को रोची So I wish you all the best, those who are preparing for Odisha Civil Service 2023. Namaskar. Okay, fine. So let us start with the discussion. Samast test de dichanti. Okay, test 1 taro syllabus kon thila, you know the syllabus. Okay, polity ro प्रथम 3टा चैप्टर्स. ओके, जोटा आपनकर स्ट्रक्चर रे देछि सेही 3टा चैप्टर्स आपनकर ओके. सो आजिरो टेस्ट रो सिलेबस हला इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ओके, तो लक्ष्मीकांत रो चैप्टराइजेशन नि आइछि एई 3टा आपनकर बेसिकली आर ऊपर क्वेश्चंस आपनकर 100टा अछि. Okay, so we will divide the discussion into two parts. 50 questions रो आजि फर्स्ट 50 questions देखिबा तापरे पुनी काली आउ 50टा questions. Okay, so पॉलिटी रो जे टेस्ट अछि सब लक्ष्मीकांत रो चैप्टराइजेशन हिसाब रे हिची तेनु से हिसाब रे आ लास्ट रे आपनकर फुल सिलेबस टेस्ट रहइबो. ओके, जोटा कि पूरा एंटायर पॉलिटी रे रहइबो. So let us start then. Come to question number 1. Okay, which act was accepted as the provisional constitution of India after independence? Right, Indian Council Act, Government of India Act 1919, 1935 and 1947. So we know that ki Government of India Act 1935 ताको हमें कौन कहूछु मदर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहूछु. ओके, मदर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहूछु. तेणु अच्छा जो माने लाइक आपण खाता पाखरे रखंतु. ओके, इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुडा जोडा मु कहिबी से गुडा टिके लिखि देबे. ठीक अछि, डिटेल सॉल्यूशन ऐप रे अछि तो सेटा तो आपण देखि कि ताको ये करि परिबे, बट सम पॉइंट्स आर इंपोर्टेंट, यू कैन राइट इट डाउन. ओके, सो क्वेश्चन 1 रो एथरे हमें जानिबा कि 1935 एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दैट इज आल्सो नोन एज द मदर सोर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. कौन पई ना almost 60 to 70% of your current constitution has been more or less derived from Government of India Act 1935. Okay, तो सही पार्टटा आपण माइंड रे रखिबे. ठीक अछि, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो किछटा पॉइंट्स एथरे लिखि देबे. इटा एक्चुअली एक्टटा जेतले ओरिजिनली हेइथिला ना, इटा एते बडा एक्ट हैला कि परे ताको से माने पुनी आउथरे स्प्लिट कले. कहीं ना सेतो बळे बर्मा ओके गोटे हेइथिला तो से माने तापरे बर्मा को स्प्लिट कले. तो अगेन फॉर बर्मा they made this act. Okay, so this
Government of India Act 1935 later on was again divided into two acts. Gote hela Government of India Act for India, and gote Government of India Act that was for Burma. So take down the original act. Okay, the original act was the longest act passed by British Parliament. The act was the longest act passed by British Parliament till the Greater London Authority Act 1999. माने एबे 1999 रे आटू बड़ एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास कला. 1999 पर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टा सबुटू बड़ एक्ट थिला. ओके, till the Greater London Authority Act 1999. Okay, next point. Due to its length, it was split. Due to its length, it was split into two acts. It was split into two acts, that is Government of India Act 1935. एटा इंपोर्टेंट टिके एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 मेंस पे भी किस्ता क्वेश्चन आस पारे. ओके, स्पेशली ओएस लेवल रे यूपीएससी पे एते इंपोर्टेंट नहीं पारे, बट केतेटा सेक्शंस करिका थिला सेटा लिखि दियंतु. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 with 321 sections and 10 schedules. 321 sections and 10 schedules. हेला एटा हला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. एंड तो दीटा एक्ट डिवाइड करले, एंड गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 and government of Burma Act having 1935. Government of Burma Act 1935 having 159 sections and 6 schedules. Having 159 sections and 6 schedules. हेला तो इथरे कोन ना केबे क्वेश्चन पड़ी पारे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सहित को देशर एक्ट रिलेटेड. तो गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट हबो सेटा. कौन कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो प्रोविजंस, बहुत प्रोविजंस सब तो लिखि हबनी. ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजंस खाली लिखि दोन सेटा. नंबर 1, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, एफपीएससी. एफपीएससी कोन? फेडरल ओके पब्लिक सर्विस कमिशन, मन जोटा बे यूपीएससी अछि. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन. ओके, देन पीपीएससी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमिशन, जोड़ा की स्टेट रो पब्लिक सर्विस कमिशन ओडा पीपीएससी, एंड जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशंस. ओके, तापर आउ कोन रो एस्टैब्लिशमेंट कमा फेडरल कोर्ट इन 1937. फेडरल कोर्ट in 1937 and bicameralism in 6 provinces. And bicameralism in 6 provinces. 11टा प्रोविंस थिला, ता भितर 6टा रे bicameralism को कोतरे थिला सेटा आपण आंसर रे डिटेल्स ता देखि देबे. ओके, सो जेतबेले आपण देखंतु हमर तो बहुत गुडे सोर्सेस अछि ए टेस्ट गुडा सॉल्व करिया पे. जेतबेले भी सॉल्व करछथि खाता रे टिके टिके जोडा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स और स्पेशली से पॉइंट जोडा आपण जानि नाहंती ताकू लिखि देबे ताहले बेटर. अदरवाइज एंती 1000टा आपण को सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जिवो प्लस तार मॉडल आंसर मिल जिवो. आपण खाली भाबुचन मु ताकू पढी देबी. ओके, आ सेटा मते किछि बेनिफिट दबो सेटा एते होइल. एमती खाता रे गोटे गोटे जोटा आपण जानि ना केवल सेही पॉइंट. फॉर एग्जांपल मु एई जो पॉइंट्स गुडा कहली, सपोज यू ऑलरेडी नो that it was split into Government of India Act and Government of Burma Act. ताले आपन को लिखिया दरकार नहीं. जो जिनसडा आपन पे नुवा अछि सेटा लिखि देबे सो दैट ताको जेतोला आपन रिवाइज करिवे आपन को सुविधा हो. ओके, हला एटा क्वेश्चन 1. सो क्वेश्चन 1 रो ओके you got the answer, that is Government of India Act 1935. Okay, so for question 1 your answer is C. Now come to question 2.
who was the first Indian Governor General of Independent India? That is class 7-8 रो GK question. Okay, आपको बेसिक किसी डिस्कशन करिवार नहीं. Okay, कौन होगा आंसर? इंडियन गवर्नर जनरल माउंटबेटन को इंडिया दिले. तो मान्यता कौन बुझछन तो से कहउछि कि जे गवर्नर जनरल हु वाज बेसिकली इंडियन गवर्नर जनरल. ओके, एथि इंडियन रो दीटा माने ही पारे. माने आपण एमती भाव करंती कि से कहउछि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे. ठीक है, तो आपण इंडिपेंडेंट इंडिया तो आपण कहले एटा माउंटबेटन. एठी किंतु से इंडियन गवर्नर जनरल जो कहउछि ओके एटा यूपीपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दा. तो सी बेसिकली मीन कहउछि पर्सन हु वाज ऑफ इंडियन ओरिजिन. ओके, सो दैट इज सी राजगोपाल चारी. ठीक अछि तो. सो बी इज द आंसर. ओके, हाँ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल. ओके, तापर तो से पोजीशन ही रहला. ठीक अछि, रिपब्लिक हे गला पर आ गवर्नर जनरल कोठो आसला. राइट. सो बुझि पाले तो काई कि सेटा तर व्हाई दैट आंसर इज ओके सी. सॉरी, हाँ, बी से कौन होची ना. Basically what it's asking is Indian Governor General. Okay, person has to be of Indian origin. That is what it is meaning. Okay, so ये रे confuse है. तापरे next come to question 3. Question 3 की आसन तो एटा भी important question. Who among the following introduced local self government in India? So you know that is Lord Ripon. Okay, B is the answer. Lord Ripon, also known as Ripon the Good. अपन जते गवर्नर जनरल सब वाइस रॉयस मानको देखिबे ता भितरु लॉर्ड रिपन ओके बहुत गुडे जिंस एटलीस्ट चेष्टा करथिले इंडियंस मानको पे भलो करिया. ओके, तो एटा पर्टिकुलरली आपनकर जो ओके से लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करले सो दैट गोटे डायरेक्ट ओके टाइप रो इन्वॉल्वमेंट लोकंकर रहइबो. ओके, तांकर थिंग्स लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सैनिटेशन लोकल लेवल से. ठीक अछि, urban हो कि rural हो. And famously or infamously due to the Albert Bill controversy, okay, he had to resign. ठीक अछि, तो देखियो सेटा सेही टाइम रे पढले आपण जानिबे. सो एटा हला बेसिकली लॉर्ड रिपन will be the answer. Okay, now come to question 4. The Pune Pact 1932 upheld joint electorate, separate electorate, joint electorate with reserved seats for scheduled caste, joint electorate with reserved seat for the caste Hindus. So C will be the answer. Okay, joint electorate with reserved seats for scheduled caste. कौन पाई जेतले communal award आसिला आपनकर. Okay, and the British gave okay separate seats for the depressed classes. Okay, scheduled caste का पाई. So Gandhiji and Indian National Congress, they thought that this will further divide the Hindu society. Already Hindu society was divided into various castes. Okay, तो से माने हबे कि नहीं ये आउरी डिवाइड हे जिवे. सो तांको हिंदू फोल्ड भीतर रखा हो बट ता भीतर ही हमें रिजर्वेशन रो व्यवस्था करियो. ओके, सो there was this Pune Pact between Indian National Congress, which was represented by Mahatma Gandhi, okay, and the oppressed classes, that is the scheduled caste, represented by बाबा साहब भीमराव अंबेडकर. ओके, पुनार यारावाड़ा जेल रे ए पैक्टा हितला. ठीक अछि, सो दैट इज द आंसर. ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 4 C. Now come to question number 5. Which one of the following liberty is not embodied in preamble to the Constitution of India? Okay, preamble रे एकटा कोटा नाही. ठीक अछि, फर्स्ट हला लिबर्टी ऑफ थॉट अछि, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन अछि, इकोनॉमिक लिबर्टी एटा नाही, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एटा अछि. सो इट इज बेसिकली इकोनॉमिक लिबर्टी. ओके, प्री पाई भी मेंस पाई भी प्रिएम्बल टा आपन को मुखस्त करिवार अछि. काहे ना मेंस रे जतला आपन आंसर टा लिखिबे यू कैन कोट फ्रॉम द प्रिएम्बल. सेही जो पर्टिकुलर पार्ट टा आपन कोट करि परिबे. सो प्रिएम्बल टा घोषिवार अछि. यू हैव टू
अपन जेमती जो भाषा रे बुझोतु आइदर बहुत प्रैक्टिस करंतु तो मन रहि जिवो और यू मक अप ओके जेमती जावी करी बट प्रीएम्बल अपन को मुखस्थ करिवार अछि ओके नाउ कम टू क्वेश्चन 6 which of the following was the basis on which the government of India Act 1919 was made okay question 6 so you see the options कौन बेटा so B is the answer okay that is Montague's declaration in 1917 ठीक है so government of India Act 1919 टा कौन थिला it was called the Montague-Chelmsford reforms ताको सेटा भी आपण कहउचंती okay so it was based on the okay recommendations of Montague in 1917 दी वर्ष आगरर okay कौन थिला recommendation what was the recommendation okay so that also you need to know so take down the major recommendations related to introduction of self-government in India. Self-government in India. Okay. The policy of 1917 promised responsible government. Okay, promised responsible government. जो term उड़ा use है जी अपन exactly सही term टा लिखिले भी better. Responsible government within brackets within quotations रखी परिबे. Okay. तापरे मॉडल आंसर टिके देखिबे से पॉइंट वाइज सातटा पॉइंट दिछ ओके तो डाकी होबनी बट यू गो थ्रू दैट important part I'm कहि देली कि it was related to local self governance okay but there are other important things also related to this particular act okay तो से act रे कोन अछि सेटा दिछि प्लस 1917 रो जो recommendation थिला कोन सेथरि भी दिछि okay all the recommendations were not accepted right now come to question 7 okay question 7 को आसंतु members of constituent assembly were directly elected by people that is wrong nominated by governor general that is also wrong elected by legislatures of various provinces देखिबा तापरे nominated by congress and the muslim league that is also wrong they are not nominated by the political parties okay actual answer ता कोन actual answer हला कि हमर constituent assembly एटा ओके पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड ठीक है जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थिले ब्रिटिश प्रोविंसेस रो इलेक्शन हेतला आउ प्रिंसली स्टेट्स वेर टू नॉमिनेट ओके सो इलेक्टेड भी थिला नॉमिनेटेड भी थिला पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड तो से ऑप्शन टा एठी नाही सो व्हिच इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन ओके व्हिच इज द members were elected by the legislative bodies okay C jota elected by the legislatures of the various provinces that was for the British provinces for the princely states the rulers nominated जेमति कि हमर मयूरभंज रो नॉमिनेट हेतिले जने ठीक अछि सेमति डिफरेंट सब आपनकर प्रिंसली स्टेट्स जो थिले सेट नॉमिनेट हेतिले सो द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड ओके बट सेटा नाही जेतु आउट ऑफ दिस C is the most okay appropriate option so C would be the answer for number 7 tapore number 8 ko asantu the constitution has the following number of articles okay so eita na ebbe bi eta UPSC ki OPS रे पढ़ियार chances कम किंतु group B group C exams रे बहुत पढ़ेगड़ा group D रे भी okay सबु बेले आरो देखिबे आंसर्स कोन दिया है it is always 395 काहे कि ना टोटल काउंट जदि देखिबे करंटली केते काउंट अछि 470 पाखा पाख हां 470 तो 470 जदि आपण देखु जंदी ताले टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपण जदि गणु जंदी ताको से हिसाब रे 470 बट द नंबरिंग स्टॉप्स एट 395 so the total number
Okay, serials of articles is 395. Okay, एबे जदि क्वेश्चन रे ऑप्शन पड़िबो ओके आपनकर 395 भी थिबो आउ आपनकर 470 भी थिबो ओके ताले आपण करिवे कोन ओके व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दैट केस जोडी की 395 भी थिबो आउ 470 भी थिबो सो देखिबे क्वेश्चन ता मीन कोन कोच ओके नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन always will remain 395 in the sense that 396 आर्टिकल अपन केबे भी आसीबो जहा भी आर्टिकल जोडा लॉजिकली ता पाखा पाखी अछि सेही थरे इंसर्शन सब ओके 21 ए हैला काली से पुनी आ गोटे कोन ऐड करबे 21 बी रे ऐड कर देबे ठीक अछि सो सेहीटा प्रॉपर्ली देखियार अछि सो एटा द ऑप्शन ही नहीं सो द ऑप्शन इज 395 बट कंफ्यूजिंग ऑप्शन जदी पड़ला 395 की 470 ताहले आपण को देखिया पड़िबो कि question of context ta kon what is the context of the question that you have to understand okay so tapare come to question number 9 so then in which case we have to choose 470 jodi se कहबो presently total number of articles jodi semti dabo ताले आपण 470 को जेपे okay still then the number of article it stops at 395 जेबे भी हो ओके तेणु सेटा आपन को देखिया पे पड़िबो कोन ऑप्शंस देछि देन क्वेश्चन नंबर 9 setting up of a supreme court at Calcutta is a part of which of these regulating act of 1773 or Pitt's India Act okay charter act character act charter act of okay 1793 and 1893 ठीक है charter act so what will be the answer for question number 9 regulating act of okay 1773 that will be the answer you know regulating act ro bahut provisions thila and we had seen the history of regulating act se act ona kai gela kai na emane jo british officers mane bahut corruption kale okay so the british government wanted to regulate the affairs of the company here right so that se man jo ette sterling loans varika magile tangu कोन पे ना एमन को प्रॉफिट बहुत होतला बट स्टिल एमन लोन्स मागुतले बिकॉज़ ये प्राइवेट बिजनेस करतले ओके जोटा की गवर्नमेंट किबा ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉस होतला किंतु ऑफिसर्स को लाभ होतला सो टू रेगुलेट दिस एक्ट्स द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17 ओके 73 वाज ब्रॉट इन ओके किंतु एठी आ गोटे भी जिंस आपण को मन रखियार अछि बट सेटा टेक डाउन जस्ट खाली सेति की ही लिखिबे ओके एटा आ गोटे रे भी हमें दैट विल सी new Supreme Court at Calcutta new Supreme Court at Calcutta was first set up through or established through was first established through regulating act of 1773 was first established through regulating act of 1773 का एटा मु लेखिया पे कहले एबे नेक्स्ट पॉइंट आसु however so underline कर that is the important part however the supreme court or this supreme court was replaced by the Charter Act of 1793. The Supreme Court, or this Supreme Court, was replaced by the Charter Act of 1793. है ना? तो 1773 जो regulating act था इतला, तो Charter Act ताकू, okay, replace कला 1793. तो इटा मन रखिए. Right now come to 10. So 10 is also related to that. Model answer के time नहीं किता को देखिए. Okay, lot of things are given. You need to go through that. Which act is associated with courts can interpret rules and regulations? Okay, तो इटा टिके obviously अपन को depth रे पढ़िया पे पढ़िबो. आमे कोन लक्ष्मीकांत ता मेनली पढुछु, which is fine. Okay, किंतु एटा टिके in depth आस्ते एटा कोठो एटा गोटे discussion अछि जो आपनकर
डीडी बसुंकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेथुरु आछे एटा ओके सेतरे से डिस्कशन टा पूरा देछि डीडी बसु कर जो कॉन्स्टिट्यूशन टा अछि ओके तांकर माने तांकर तो बहुत गुडे वॉल्यूम्स अछि कॉन्स्टिट्यूशन जोटा हमें यूपीएससी पे नॉर्मली पढू ओके शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन टा सेटा बहुत गुडे एंती डिस्कशंस देछि ओके एबे तो जो माने लेट्स से लास्ट 5-6 years ହେଲା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଟ୍ अर्लियर इवन नाउ जोन टिके एनालिसिस भल पांती डीडी बसुंकर बुक्स गुडा बहुत भलो ओके तीनिटा भलो अथॉरिटेटिव बुक्स अछि लक्ष्मीकांत नो डीडी बसुंकर गोटे अछि ओके तापरे आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप तांकर भी बहुत भलो बइटा बट एटा जंदी पॉइंट वाइज दे देछि लक्ष्मीकांत रे समस्तकर सेटा बेसी दरकार ओके पॉइंट्स रे मते दरकार बट तारो डिटेल एनालिसिस सुभाष कश्यप रे भी हिची सुभाष कश्यप सेक्रेटरी जनरल थिले पार्लियामेंट रो ओके लोकसभा आई गेस ही वाज द सेक्रेटरी जनरल तांको बहिटा भी प्लस डीडी बसुंगर एडवांटेज हला आपनकर एनालिसिस बहुत से करछन आ मते जाला के डिमेरिट हला से निज ओपिनियन बहुत देछन ओके बिकॉज़ से बहुत ही लर्नेड लोक माने संस्कृत रे भी जोडा में पीएचडी करिया कोचु से सब जिंस ही करछन बहुत गुडे जिंस ऊपर लिखिछन सो ही इज लिटिल बिट राइट लीनिंग ठीक है नेशनलिस्टिक तेणु से कौन होची ना से बहुत जगह जेमति कि आर्टिकल 44 ओके यूनिफॉर्म सिविल कोड सेटा जतले से एक्सप्लेन करचंदी ही हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स जहां लिखिचंदी सत बट लक्ष्मीकांत रो सेटा बेस्ट बुक सेठी ओपिनियन किछि नहीं ओनली फैक्ट्स आर गिवन यू फॉर्म योर ओन ओपिनियन ठीक है तो बट एनालिसिस ये रो if you have time किबा आपण बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी आ 3 वर्ष पर परीक्षा देबे देन if you want to finish लक्ष्मीकांत ताको सारी की you can go for dd basu also okay तो एटा particularly dd basu रे देछि एटा which act is associated with courts can interpret rules and regulations okay तो जोटा एबे मु डिस्कस करथली that is the thing that is the charter act of 1793 okay the charter act of 1793 right तो सेतरे गोटे पॉइंट खाली लिख दियंतु तो गोटे तो ऊपर लिखिले कि इट चेंज द सुप्रीम कोर्ट व्हिच वाज ब्रॉट इन बाय और एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770 लिखि जन ऊपर और लिखिया दरकार नहीं ता पर पॉइंट लिखंतु बिकॉज़ आमे देखुछु कोन जुडिशियल रिव्यू इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन जुडिशियरी ठीक है तो ई पार्लियामेंट जहां पे आडु सडु जदी लॉ कर देला ताहले सुप्रीम कोर्ट सेटा रिव्यू कर परिबो ठीक अछि सेटा बेसिकली ये यूटू आपण कहि परिबे स्टार्ट हिच सो टेक डाउन नेक्स्ट पॉइंट The Charter Act of 1793 recognized for the first time the powers of Supreme Court to interpret laws and regulations and to strike down anything that was unconstitutional okay that was unconstitutional. This formed the stepping stone of the principle of judicial review in India. The principle of judicial review in India. Okay, so Charter Act of 1793, that is the correct answer. Now come to question number 11. Which of the following are the features of Regulating Act of 1773? Okay. So first, Governor of Bengal was designated as Governor General. Supreme Court was established in Calcutta.
East India Company got constitutional status. So all of these are correct. TH. All of these are correct. Okay, so C will be the answer. All of the above are correct. तो फर्स्ट तो हमें डिस्कस करि सारछु कि सुप्रीम कोर्ट कोठी फॉर्म हेतला आपनकर. ओके, तापरे it also gave constitutional status to the East India Company. Okay, East India Company की constitutional status भी देथला. And your the second one, जो governor of Bengal was designated as, okay, Governor General. So that is also correct. Okay. So all are correct. C is the answer. Now come to 12. Which were the salient features of Government of India Act 1935? Federation and provincial autonomy. Okay, yes, this was there. Provincial autonomy thila. How federal autonomy bhi thila. Diarchy at the center. Okay, that is also correct. Abolition of diarchy in the state. Seta recommendation answer rahithila. That was recommended that diarchy is to be abolished in the states. All three are correct. Okay. Our model answer re, okay, around 18 point देइछ. तो सेटा पढिबे सब गुडा. Okay, कि Government of India Act 1935 रो salient features गुडा कोन. Lots of features are there. काहे ना we are saying that it is the mother source of constitution. Okay, mother source of constitution. 60 to 70% of your constitution directly has been taken from here. So the provisions गुडा ठीक है details से देखिबे, because throughout this we will be getting mention of it. Okay, ताको हमें पूरा जो 50 टा 100 टा क्वेश्चन देखिबा सब थरे मेंशन आपनकर थिबो. Okay, so go through it in details. Okay, गोटे पॉइंट से गले it will be बहुत ही लेट हो जिवो. Okay, तो अपन सेट पार्ट टा देखि देबे आपनकर detailed solution. Now come to question 13. Which of the following or is or are true? Simon Commission, which was appointed in 1927, submitted its report in 1930, which suggested abolition of diarchy. The Pune Pact was reaction to Simon Commission and its report. Okay, so one is true. Okay, one is true. It recommended the abolition of diarchy. That is correct. Pune Pact ro kintu हम already देखिलु Pune Pact टा कौन थिला. Pune Pact is no way related to Simon Commission. Pune Pact was related to separate electorate for the downtrodden. Okay, for the scheduled castes. ता सहित related थिला Pune Pact. It had nothing to do with the, okay, Simon Commission. So only one will be correct. Okay. Next, question 14 case on the. Which of the following is or are true regarding the Morley-Minto reforms? Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. आगुरु कोन लेजिस्लेटिव काउंसिल से इंडियंस थिले. एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे, ओके, प्रथम तौर पई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ओके, so that is correct. See, a law member हिसाब रे join कले. So one is correct. The reforms introduced separate electorates. Okay, so that is also correct. Separate electorates were introduced. Okay, setare, you know, communal agenda thila. That is why, okay, he is known as the father of communal electorate. Okay, so dita jako apanଙ୍କର ठीक अछि, both are correct.
तार पॉइंट सब देखिए जोड़ा देछि आपनकर डिटेल्ड आंसर रे ओके द ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी कथा कहि तो से कांसेप्ट बुझिबे ऑफिशियल मेजॉरिटी कोन नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी कोन ऑफिशियल मेजॉरिटी मींस सेठी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थिला कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला सेथरे ब्रिटिश ऑफिसर्स किंबा जो माने ब्रिटेन पाई की गवर्नमेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करछन्ती सेमानको संख्या अधिक थिला ना इंडियंस माने ओके जो माने की नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ताको संख्या अधिक थिला ओके जदि ऑफिसर्स मानकर कि एम्प्लॉइज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रो कि ईस्ट इंडिया कंपनी रो संख्या अधिक थिला सेटा आपण कहउछन्ती ऑफिशियल मेजॉरिटी ओके जदि इंडियंस मानकर अधिक थिला किंबा those who are not related to the government ताकर अधिकार थिला ताको नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो जाउ तेनु जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला सेथरे ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन करायला ऑल्दो बेसी इंडियंस मानको चांस दियाला ओके तथापि मेजॉरिटी टा ऑफिशियल मेंबर्स कर रहला किंतु स्टेट लेवल रे प्रोविंशियल लेवल रे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी पई अलाउ करावाला सो मोर नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विल बी देयर इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव ओके असेंबलीज ठीक अछि आउरी भी बहुत गुडे देछि सेटा गोटे गोटे कर ताको देखि देबे ओके क्वेश्चन 14 रो ओके तारो डिटेल आंसर ता जोडा सो आंसर इज सी फॉर क्वेश्चन 14 now come to question 15 so which of the following is or are true regarding Government of India Act 1919 okay it abolished diarchy introduced by 1909 Minto Morley reforms it introduced direct elections in the country okay so which of these are true so first one it is not true okay it did not abolish diarchy introduced by the Morley Minto reforms but direct elections in the country okay introduction setara hella so only 2 is correct so B will be the answer first ta kain ki bhul hala why the first one is wrong okay so सेथुरु अपन लिखि दे परिबे or you can take it down it introduced the system of diarchy in provinces okay diarchy in provinces introduced kara hala so first one is wrong first statement ta bhul अछि second one is correct okay now come to the next part question 16 article 368 provides for the procedure for amendment of the constitution about amendment consider the following okay so amendment of the constitution upare a question ta achi so let us see which of these are true all amendments to the constitution are initiated only in parliament which is correct state ଆପଣଙ୍କର constitutional amendment initiate kari paribeni states cannot initiate it okay so this is correct the constitution commission is required to amend the constitution okay the constitution commission is required to amend the constitution do we have a constitution commission eta european union garika semane basically okay tanko pakhare eta semanakor sei type ro body semane rakhichenti amaro constituent assembly thila ebe sei power ta parliament pakhare ठीक अछि so we don't have any constitution commission so 2 is wrong okay eta mainly european countries re apna paibe after the passage of amendment bill in the parliament and in some cases in state legislatures the referendum is required for ratification of amendment referendum darkar referendum mane lokon ku pachara habo loko kahibe ki ha eta hau ki na hau to semiti kichi provision ama constitution re nai there is no provision of any referendum in this regard in our constitution or for that matter in any regard okay a referendum type ro plebiscite type ro concept hi ama constitution allow karen okay tapare number 4 to eta bhul hala okay this is not correct
4 hela sovereignty of elected representatives is the basis of amendment procedure. Okay, sovereignty of elected representatives ता अर्थ कौन, what does it mean? कि जो अपन को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अछंती से माने जहा इच्छा कि जेमती भी इच्छा से माने वोटिंग करि परिबे. ओके, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, राइट, व्हिच इज करेक्ट. से माने अवश्य एथरे गोटे जिंस हमकु जेतरा व्हिप करिका इशू करा हुए. ओके, सो दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच यू कैन डिबेट कि लोक कि गोटे इंडिपेंडेंट कि गोटे कैंडिडेट चाहूची कि गोटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहूची नो रे वोट करिया पे, बट तार पार्टी व्हिप देछि कि से यस रे ही करियो. ओके, सो बट एनीवे जनरली स्पीकिंग, ओके, दिस इज करेक्ट. Sovereignty of elected representative is the basis of amendment procedure. So 1 ta ठीक हैला, 4 ta ठीक हैला, 2 and 3 are wrong. So 1 and 4 only, A will be the answer for question 16. Now come to question 17. Consider the following statements about the constitutional amendment in India. A private member of the parliament cannot introduce a constitutional amendment bill. Okay, private member की है? Who is a private member? अच्छा, private member ताले कौन हो? Can we say a person from the opposition is a private member? Is that correct? ताले किए private member किए? अरे से opposition रो है था किए जो opposition रो नहीं. Okay, anyone who is not a minister से हैला private member. तो से ruling party की ruling coalition रो भी है तो, but he is not a minister. जनरली कौन हुए जो लॉज गुड़ा थाए आपनकर लॉज गुड़ा किए मूव करन, जो ड्राफ्ट बिल्स गुड़ा किए मूव करिवे, जो डिपार्टमेंट रो मिनिस्टर से ही मूव करिवे. एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट मूव इट. ठीक अछि, जो मिनिस्ट्री रो, ओके, जो डिपार्टमेंट रो मिनिस्ट्री ताकर जे मिनिस्टर थिबे सीए ताको मूव करिवे. सपोज समथिंग इज रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सेटा के होम मिनिस्टर मूव करिवे. ठीक अछि, ता माने कोन ओनली मिनिस्टर्स generally or normally can move the laws. Okay, private member bill हैला जने non minister अछंती, he is not a minister, still he is bringing a bill, that is known as the private members bill. He may be from the opposition, he may be from the, okay, opposition रो से ही परंती किंबा ruling party रो ही परंती, that does not matter. बुझी परले private members bill. तो से ऐसे पहुंचती फर्स्ट, a private member of the parliament cannot introduce a constitutional amendment bill. Okay, first हमें देखी था कौन-कौन से कहूची. The prior permission of president is required for introduction of every constitutional amendment bill. Special days are reserved for introducing constitutional amendment bills. Okay, which of these are correct? Come to the first one. First statement ta कौन तो कौन? Private member, okay, of the parliament cannot introduce a constitutional amendment bill. एमती किछि भी हमरो constitution रे नहीं. Okay, so से introduce करि परिबे, right? तापरे second, prior permission of president is required for introduction of every constitutional amendment bill. That is also not required. तापरे special days are reserved for introducing constitutional amendment bills. No, किंतु special days are reserved for these जो माने private members अछंती तांको से जो bill move करिवे ता पई special days reserve करा जाय. So in this case none of these are correct. So D will be the answer, none of the above. Okay, तापरे question 18 की असंतु. Consider the following statements about the procedure to amend the Indian Constitution. A constitutional amendment bill requires the prior permission of the president, already discussed कलु.
It can only be introduced in the Lok Sabha first, as it is the house of the people from which the constitution derives its authority. Okay, which of the following statements are correct? Eta apan kon dita ko sahaj achi. Which of these are correct? Only two. Kahi Rajya Sabha re paribo nahi constitutional amendment bill. Apan money bill और constitutional amendment bill confuse करंतु नहीं. Okay, एटा money bill रे आपण लोकसभा रो जेतु पावर टा रहउची राज्यसभा रो किछि पावर नै money bill तेनु सेटा लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हुए. constitutional amendment bill तो हे परिबो ना जोठी भी हे परिबो. तो सेटा भी भूल. Both are wrong. ठीक अछि. Both are wrong. President करो. Okay. Prior permission दरकार ना थाए. Okay, so both are wrong. अच्छा, president करो permission को थोड़ा दरकार है. Prior permission, can you tell me को type of bill रे president को prior permission money bill रे तो दरकार हुए. And खाली तो money bill नो आउ भी अच्छी. Apart from money bill, ordinary bills रे president को prior permission माने कौन ना प्रेसिडेंट को प्रथमे आपण बिल रो ड्राफ्ट देखिबे से ओके करिवे तापर आपण इंट्रोड्यूस करिवे ताहले कोन होची ना जदी बिल रे मेजर चेंजेस किछि आपण करू नाहंती ताहले प्रेसिडेंट को पाकु जेतोले जीवो ओके ताकर एसेंट पैसे संगे संगे एसेंट दे देबे केना सेदा ऑलरेडी देखि जंदी ना राइट तो मनी बिल ता सिथि पे करे जे कि सेटा संगे संगे पास होबा दरकार तो प्रेसिडेंट ऑलरेडी से देखि सरचन ओके तो कालीरो डिस्कशन अगुरु मते एटा कहिबे मनी बिल तो गोटे हैला. So take down what are the types of bills, okay, what are the types of bills which require prior permission of the president. Money bill ta answer debe ni seta ame discuss kar dechu. Money bill obviously apart from money bill au ko type of bill achu. Okay, so both are wrong. Which of these are correct? Both are wrong or none is correct. So D is the answer for question 18. Now come to question 19. A constitutional amendment bill must be passed in each house by a combination of which of these conditions? Okay. Number one, 2/3 of total membership of each house. Okay. Constitutional amendment bill. 2/3 of total membership of each house. Majority of those present and voting in each house. 2/3 of those present and voting in each house. Majority of total membership of each house. The first is it correct? 2/3 of total membership of each house. Okay, seta kon hoye 2/3 of members present and voting thae. Total membership ro majority mane half. Okay, so one is wrong. So one jodi wrong hela tale taro complementary eta apan dekhibe 3 is correct. 2/3 of those present and voting in each house. Majority of those present and voting in each house. That will be okay. Majority of total membership of each house. Each house ro 50% plus 1. Okay, majority of total membership, 3 and 4 are correct. So D is the correct answer for question 19. Ebe asantu question 20 ki. If a bill seeks to amend the federal provision of constitution, A must also be ratified by the if a bill seeks to amend the federal provision of the constitution, ताले कौन होबो तो नॉर्मल जहा कंडीशन अछि आपनकर constitutional amendment पाई under 368 plus ratification by okay half of the states, right? Half of the states ro lower house रे माने legislative assembly रे simple majority रे ताको ratify करिया पड़ियो. That is the thing. So let us see कोटा को जेटा A hela, it must also be ratified by the legislatures of at least 2/3 of the state by special majority. Okay, hold on, that is wrong. It must be introduced in parliament with prior consent from president. It must receive the approval of constitutional bench of Supreme Court under Article 143 before introduction in parliament. All three are wrong. Okay, abitru kichi bhi no. So answer ta kono na
368 अंडर रे जहां अपन को प्रोविजन अछि पार्लियामेंट रे, दैट मींस 2/3 ऑफ द ओके members present and voting and more than the majority of the total membership of the house plus ratification of okay more than half of the states in their lower house by simple majority. Okay, माने लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स रे लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि से ओके विधान परिषद अछि से माने इन्वॉल्व होंति नै एतरे आ सिंपल मेजॉरिटी रे पास होबार अछि आ पूरा जते स्टेट अछि समस्त कर करिया दरकार नै 50% स्टेट प्लस 1 ओके जते बळे 50% स्टेट प्लस 1 हे गला त माने इट विल बी सेंट फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक अछि जेंति हमरा एनजेसी रे हितला GST रे हितला के एनजेसी रे मेनली ओके. सो now come to 21. The first president of India who got elected unanimously. So, a factual question ki hai? D is the answer. Neelam Sanjeeva Reddy. Okay. If you are interested in political history of India, ei sobu jo na pacharchi eguda emti bahi re padhile jaha jete interesting lagibo apan jodi taku visually dekhibe taku apan ko better lagibo au apanଙ୍କର पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी स्ट्रांग हम कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री न जानले बहुत गुड़े जिनस आप जान पारे ये जिनसा आज जोड़ा होटा काली माने विगत वर्ष जिनस आज ये सिचुएशन में पहुंचु. सो देयर आर 2-3 वेरी गुड सीरीज जोटा कि आप यूट्यूब वरिक देख पारे. गोटे है एबीपी न्यूज रो ओके जो शेखर कपूर कर प्रधानमंत्री सीरीज ओके दैट इज वेरी गुड. सेटा एबे तो होनी तार प्रति 2-3टा ये थिला. सो इट टेल्स यू कंप्लीट डिटेल्स ओके जते सब मेजर हमर सब अकरेंसेस हेची और पॉलिटिकल ओके इश्यूज हेची ता ऊपर बहुत भलो रे सेटा करे. So that you can जतले फ्री टाइम थिबो 24 घंटा पढ नथिबे जतले फ्री टाइम थिबो you can go for that. Okay, now come to the next question. Okay, that is question 22. Consider the following statements about the position of states concerning constitutional amendments. The states can initiate a constitutional amendment in bill in US unlike in India. ठीक कि नहीं? तांको states माने कर परिबे ओके हमर एटी करियो पार्लियामेंटिकली करियो तांको states कर परिबे. The constitution does not provide a time limit for getting the required amendment cleared by the states in India. Okay, that means जदि states को पाखु को गला एतिकी दिन भितरे आपण तको ओके आपण को लेजिस्लेटिव असेंबली रे पास करिवे कि न पास करिवे जब भी हो बट विद इन दिस मेनी डेज यू हैव टू गिव इट ओके. सेटा से पचरची व्हाट इज द थिंग और सेटा 368 अंडर रे व्हाट विल बी द आंसर. टू रो सेमते किछि प्रोविजन अछि कि डू यू नो एतिकी दिन भितरे 10 डेज भितरे गोटे वीक भितरे आपण तको ओके करिकी पठांदो सेमती किछि अछि कि इफ यू नो. नहीं ओके दैट इज करेक्ट. The constitution does not provide a time limit for getting the required amendment cleared by the states in India. Okay, so that is correct. किछि टाइम लिमिट नहीं कि एमती 10 दिन रे कि 7 दिन रे आपण ताकू रेटिफाई करंतु कि रेटिफाई न करियो यदि व्हाटएवर. Okay, so both of these are correct. Okay, so C is the answer. 22 row. Now come to question 23. Consider the following statements. The president cannot send back a constitutional amendment bill for reconsideration to the parliament. Okay, कौन है ठीक ना बोल. Cannot send back a constitutional amendment bill.
That is correct. Okay, he cannot send back. Which of this following statements is correct? Constitutional amendment bill return kari paribeni. Okay. Elected representatives alone have the power to amend the constitution. Elected representatives alone have the power to amend the constitution, right? कहीं बोलो जी मतलब सेटा तो पार्लियामेंट ही करिवो ना तो पार्लियामेंट तो समस्त इलेक्टेड ना नहीं यस राज्यसभा रे भी अछंती ओके नॉमिनेटेड मेंबर्स अछंती राइट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे दे आर आल्सो इन्वॉल्व तेणु से जो ओनली लिखि देला ओके सेटा सो टिके देखि कि सेटा करियर अछि अलोन elected representatives alone no even nominated representatives okay they also have the power to amend the constitution they will also vote in that okay tapare the judiciary cannot initiate the process of constitutional amendment but can effectively change the constitution by interpreting it differently that is correct constitution nije taku ame kon कहउछु आ ना गोटे आजकल दिया होची judicial legislation okay judiciary cannot legislate judiciary cannot make laws किंतु सेमाने different ways रे okay एमिति व्यवस्था करछन कि law टा ही change हो जाउछ okay you are forced to make the changes in the constitution आगु गोटे क्वेश्चन अछि हमें देखिबा article 21A okay article 21A जो इंट्रोड्यूस हला constitution रे ओरिजिनली कौन थिला जिंस ना सुप्रीम कोर्ट रो कहबार थिला कि सेटा गोटे फंडामेंटल राइट हे परिबोनी लेटर ऑन चेंज करा हला पोजीशन इट बिकेम ए फंडामेंटल राइट नॉट ओनली सेटा गोटे फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट कहले कि सेटा फ्री ओके आ कंपलसरी भी रहबा कथा तापर जे कि गवर्नमेंट ओके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आनले सो ऑल्दो द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशियरी कैनॉट डायरेक्टली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन direct or okay create such conditions in which the government has to bring those changes in the constitution huge of course again it depends on the government also tapare fourth question to the parliament can amend any section of the constitution so eta basic structure hisab re okay any section of the constitution so just think about it parliament can amend any section of the constitution eta hobo na hobon babandu answer deichi kono answer deichi C 1 and C only deichi that is the answer but fourth one hobo ki nahi okay I feel fourth will be correct se kon likhi ji bujhle parliament can amend any section of the constitution eta any section no means in the sense that se article कहउची कि part कहउची जा भी हो कोटा भी से amend करि परिबे किंतु amend कला भितरे तारो बेसिक स्ट्रक्चर टा चेंज कर परिबे अमेंड तो करि परिबे ओके सी सेति की पचर छी दाउ तो किछि पचर ना द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि मन बोले एनी सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हां काई हो कोठा लेट्स से फंडामेंटल राइट्स आपण you cannot take away or average fundamental rights ताकू बढ़ी तो परिबे ना बढ़या पई अमेंडमेंट करि परिबो सपोज एबे गवर्नमेंट कहबे कि आमे एलजीबीटी क्यूआईए कम्युनिटी पई आमे किछटा फंडामेंटल राइट्स ऐड करिवो ठीक अछि जोटा स्पेसिफिक तांको पई थिबो तो से माने आ गोटे लेट से कोडी गोटे आर्टिकल रे 14 रे भीतर से आ गोटे कोन ऐड करिवे ठीक अछि अमेंड कले कॉन्स्टिट्यूशन टाको ऐड करि परिबे एटी एतिकी मात्र पचुची amend any section of the constitution or not they can amend any section of the constitution but they cannot violate the
बेसिक प्रिंसिपल जेतेबेले अमेंड करिवे एबे जो सेंस रे किंबा जति राइट्स दिया हिची ताको आपण कमे परिबे तो सेक्युलरिज्म गोटे वर्ड टे इंसर्ट कलु आमे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिके प्रिएम्बल एबे गवर्नमेंट जदी कहबो कि मु से सेक्युलरिज्म जगह रे इंडियन सेक्युलरिज्म इंडियन वर्ड टे सेतर मिसे और इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म सेतर मिसे ठीक अछि चेंज कर परियो कि नहीं कर परियो किछ असुविधा नहीं okay so understand what it means it is saying that okay can the parliament amend any section of the constitution it can amend anything in the constitution but provided that as per the Keshwananda Bharati judgment okay कि आपनकर basic structure of the constitution violate होबा कथा नुह ताको देखि कि जहां भी amendment कर परियो so there is nothing which the parliament cannot amend है एटा माइंड रे रखियो ठीक अछि आई थिंक मैम आज जे 12 o'clock रे तो जेति की हैला विल कंटिन्यू देन टुमारो विल कंटिन्यू 20 25 टा ही सर दबा ओके दैट विल बी फाइन 24 को आसन सो 23 रो आपन का आंसर देछि 1 and 3 ओके बट आंसर ऑफ 1 3 and 4 से नाही एथरे सेटा स्टार मार दो ठीक अछि तो जहां आंसर रे दोछि सबले ठीक बोले सेमति किछि माने नै हमको निजो बुद्धि लगे रछि ओके सो आर आंसर होबो 1 3 and 4 1 and 3 obviously and 4th also because it is simply asking the parliament can amend any section of the constitution true anything in the constitution can be amended or everything in the constitution can be amended okay subject to the Keshwananda Bharati okay judgment right so seta mind re rakhibe now come to question 24 assertion reasoning question achi okay question 24 So assertion or reasoning ta dekhontu assertion hela the reservation of 33% of seats for women in parliament and state legislature does not require constitutional amendment okay parliament and state legislature does not require constitutional amendment so it hela assertion ठीक अछि कोन हला assertion ता ठीक अछि कि नहीं अरे स्टेट लेजिस्लेचर रे जदि आपण चेंज करियो कि ताकर 33% रिजर्वेशन होबा कथा तो सेटा सेंटर ऑफ स्टेट भितरे जो पावर इक्वेशन ता अछि सेटा चेंज करियो कि नहीं सो इट इज अ काइंड ऑफ ए फेडरल ओके इशू इज इन्वॉल्व ताले 368 अंडर रे जोटा ताकर भी कंसेंट न पे पड़िबो हाफ ऑफ द स्टेट्स मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स करो रैटिफिकेशन तो सेटा हबो सी पचौची okay the reservation of 33% seats for women in parliament and state does not require constitutional amendment so seta the constitutional amendment kariya pai padibo okay there has to be a constitutional amendment ठीक अछि तापर reason कोन political parties contesting elections can allocate 33% of seats if they contest to women candidates without any constitutional amendment this is correct reason is correct okay तो आपण कहबे नहीं हमर दरकार आमे जेतिकिटा सीट्स माने जेतिकिटा कैंडिडेट्स दबु ईच पॉलिटिकल पार्टी आमे तादर 1/3 वुमेन मन को ही दबु तो ऑटोमेटिकली हे गला बट सेटा पॉसिबल नो ओके स्पेशली बहुत गुरे नॉर्थ इंडियन पार्टीज अछंती जे सेमिति देखियो बोले कोनोसी पार्टी माने 1/3 वुमेन मन को एते ओके टिकट्स देनी हमर रादर ओडिसा रे हमर जो पार्टी थिले पावर रे से माने भी बहुत वुमेन मानन को दोतले बट सेंती ओवरऑल देखिले नो पार्टी डज दैट ओके आ किछि पार्टी तो तार अगेंस्ट ही थिले ओके एबे से माने एबे जेतु नेक्स्ट जते बेले आपन को सेंसस है कि डिलिमिटेशन हबो ता परे दिस विल कम इनटू इफेक्ट ओके जोडा कि ऑलरेडी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ता पास है सर ओके एबे तार इफेक्ट हबनी डिलिमिटेशन हैला परे हबो ठीक है सो दिस पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी वाला जो नॉर्थ इंडियन पार्टी जोडा सब अछंती
Okay, Uttar Pradesh or Haryana based kete parties achandi semane they were strictly against this. Women manku kahi ki ame 33% dabu, right? So TMC की आज further अभिवादी के मतलब participation अच्छे. हाँ सेमानकर सेमाने करचंदी तापर इवन बीजेडी रे भी भलो थिला. ओके तापरे आउ भी केतेटा अछंती फॉर एग्जांपल सम स्मॉलर पार्टीज इन तमिलनाडु रे भी it's also okay. Kerala, some parts it is there, not fully, but some parts it is there. Okay. Northeastern states, okay, some northeastern states, because you know, Tankara city matriarchal society, northeastern states, right? Tankara jodi apana sociologically dekhibe, Tankara states kuda patriarchal no, matriarchal, kichita matrilinear societies भी तांकर अच्छी सब northeast. Okay, देखिए ऐसा that is so anyway. तो इटा कौन है ना assertion is wrong. Reasoning is correct. Okay, so D is the answer. Assertion is false. Reasoning is true. Okay, reasoning ta jodi samasta kari parthante to bahut bhalo hoithanda. Unfortunately, he parni achpandi. Okay, next 25, question 25 kon jantu. Several provisions in the constitution can be amended by simple majority of 2 houses of the parliament outside the scope of 368. Okay, so eta list dechi aro Lakshmikant re to dekhantu abitur kota haba. These provisions include inter alia, citizenship clauses, abolition or creation of legislative council in states, election of the president and its manner. Okay, means that a simple majority re apno change kari paribe 368 article 368 ku aniba darkar nahi ei case re. तो से list ta mane rakhibe. Okay, citizenship clauses can be changed without constitutional amendment. Okay, tapare abolition of creation of legislative council in state without constitutional amendment seta hei paribo eti kotha states have to request. Jo state chahuchi ki mora you know change karibe ki mora I have to abolish or I have to introduce, okay, or establish this legislative council semane center ku kahibara achi. So that also can be done without, okay, 368. Tapare election of president and its manners. This cannot be changed. Okay, mane akku change kariya pe hele proper constitutional amendment darkar habo within the scope of 368. Okay, so 1 and 2. Okay, so A will be the answer 1 and 2. Aw tara model answer re dekhibe mane se explanation re dekhibe जेता लिस्ट टा देइछ किबा लक्ष्मीकांत रे भी देइछ लिस्ट टा से लिस्ट टा टिके पढिबे. ओके, दैट लिस्ट यू हैव टू गो थ्रू ताले आपण जान परिबे. ओके, मैडम आसले नहीं हाँ नहीं नहीं सुजाता मैडम आसले मते कह दे. Okay, so we'll stop here 25 ta the next 25. Okay, next kali देखिबा जदी possible we'll go for more. Okay, जेतु मैम को टाइम हेलानी. So 25 hela 1 and 2 only, not 3. Okay, election of president and its manner ता पई proper constitutional amendment आपन दरकार हो. Okay, कोन पे दरकार हो president for election रे को माने involved states involved कि नहीं. Okay, ता माने again state आउ सेंटर रो पावर इक्वेशन चेंज होबो जदी आपण प्रेसिडेंट कर इलेक्शन रो किछि रूल्स चेंज करिवे. ठीक अछि, तो स्टेट करे भी आपण को ओके यू हैव टू टेक देयर कंसेंट. ओके, at least half of them mutually. So we'll stop here then. स्ट्रक्चर टा आपण को देखि दियंतु हम नेक्स्ट दी तीनटा एटा फर्स्ट हमरो सब्जेक्ट वाइज रोची. ओके, तो ई टेस्ट हला आपण को एतरे आपण को रहला constitutional framework system of government. Okay,
ता भितर जहाँ सब मॉड्यूल्स अछि लक्ष्मीकांत एटा लक्ष्मीकांत रो चैप्टराइजेशन हिसाब रे हेछि तापर सेकंड टेस्ट तो एटा काली किबा वर्स्ट केस पर दिन हमर कंप्लीट हे जिवो ओके तापर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ओके फोर्थ टेस्ट रहइबो other constitutional dimensions political dynamics working of the constitution okay आउ फिफ्थ टा हला आपन को फुल सिलेबस टेस्ट एटा हमें आई ट्राई ओके काली तो किछि ये क्लास नथिबो तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुमारो कि न हला ताले पर दिन जो दिन सरी जिबार ता नेक्स्ट डेट हमें रखबे सो इधर ऑन काली हला काली मंडे ना मंडे की ट्यूसडे दिन अपन करम ओके ट्यूसडे यू कैन हैव द एग्जाम आफ्टर द क्लास